अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने लेट्स गिव अदर मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द वर्क वेयर दे डू while loops. The goal is find the product of the all number in the range. Here is an example solution in the to this problems. आगे आपके नीचे चलो in the example code we constantly again to sum it at each instruction the values n plus 1 mn the version of the project we accomplete the project of these values. We require the use the enter n and which should be less than m, otherwise m we will receive as the result in numbers. If we run the program, if n is equal to 2m n is equal to 6, we will obtain the following result. Be careful, the product grows very fast, and so you may need to use big integers instead of long for the calculated result. Also beware of the hidden integer overflow. Unchecked code will silently overflow, and the code above will produce the incorrect output instead of showing an error. To overcome this, you may surround the line, hold the multiplication by the checked keywords. इसके बाद आगे लूप आई हुए है। फॉर लूप के बारे में आपको बताता चलो। फॉर लूप आर silently more complicated than the while and do while loops, but on the other hand they can solve more complicated tasks with less code. Here is the scheme describing for loops. ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। They contain the initializations block A and conditional B and D and uploading components of the loops variables C. We will explain them the details shortly. Before that is let's look at how the program code of for loops and looks like. It consists of the initialization part for the counter and the pattern and equal to 0. Boolean condition होती है expression of the updating counters. It might be instance and body of the loop. The counter of the loop distinguishes it from the other types of loops. Most often the counter changes from the given initial values to final one in the ascending order. For example, from 1 to 100 number of the instructions of a given from the loops is usually known before its exception start. A for loop can have one or several loop variables that move in ascending and descending जो थी ना ascending and descending order or with the steps. It is possible one loop variable to increase and the other to decrease. It is even possible to make the loop from 2 to 1 0 to 4 in the step of the multiplication by the 2. Since the update of the loops variables can contain not only addition but the many other arithmetic as well as operations. अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट के बारे में। अच्छा, जैसे आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी हैश पढ़ रहे हैं। सेंड नॉन ऑफ द लिस्टन एलिमेंट ऑफ द for loop is mandatory. You can skip them all and we will get the infinite loops. अच्छा, इसके बाद आगे नो द लेट्स कंसीडर इन डिटेल द सेपरेट पार्ट्स ऑफ फॉर लूप है। आगे इसके आगे और बताऊँ आपको इनिशियलाइज फॉर लूप्स क्या होती हैं, इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस जस्ट बिफोर इंटरनिंग द लूप। यूजली द इनिशियलाइज ब्लॉक is used to declare and counter variable, also called a loop variables,
आज ऐसा अगर हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।